Okay, so that is introduction to microbiology, है ना? So last time, as I told, that the topic is not that suitable if you say introduction to microbiology, because whatever is microbiology, you were already introduced to that in the ninth standard in the form of useful and harmful microbes, right? But this topic in your lesson, whatever is the syllabus given, this is more about applied microbiology. Okay, applied microbiology matlab where we use the knowledge of microorganisms in different industries and for the benefit of the mankind. Okay, so first of all, microbiology means all different types of microorganisms. Correct, in the past few months our lives have changed. That is also because of a microorganism. Correct, so you have protozoans, you have bacteria, okay, you have fungi, viruses, all these types of microbes, anything which can be seen under the microscope, okay, not with the naked eye. Then out of all the different types of microorganisms, which is the smallest in size, which group of organism? सबसे छोटा साइज में कौन सा है? Any answer? Viruses. Viruses. Any other answer? Viruses are extremely small, that's right. And there is one more called as mycoplasma. That is the smallest living cell. Okay, जो mycoplasma है ना, that is the smallest one. You have to remember that. And overall, in a range, if you compare, then viruses are smaller even than bacteria. That is why there are some viruses that can cause infection to bacteria also. Okay, तो उसको bacteriophage करके बोलते हैं. ठीक है? Then we had seen the first one, applied microbiology. में we were mainly discussing about industrial microbiology. Okay, like in the sense, if you think from your point of view, अभी तुम लोग 10th standard में हो, तो when you will take up this subject, suppose biology में interest है, and as far as I know you all, बहुत लोगों को bio में interest है, correct? Yes, that's a confident nod. तो अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड उसमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इंटरेस्टिंग लगता है, तो यू कैन टेक अप माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. Okay, that is a subject which you study at the graduation level, microbiology. Okay, so that you can specialize further at the MSc post graduation, and then you can become a microbiologist. Okay, so बहुत applications हैं. Too many industries are surviving because of the microorganisms. So those some examples we have to see in this lesson. We have already seen in the previous lecture also some of them, है ना? So when you're talking about microorganisms, सबसे पहले तो आता है food industry. Is so many different types of food products we are able to get because there are microorganisms. Okay, then food के बाद आता है there are some economically important products which are produced, which are not categorized as food, but they are economically important. Okay, and then the other sector where microbiology is most useful, that is medicine. Okay, medicinal products बनते हैं, industrial products economically important compounds बनाते हैं. Okay, food products बनते हैं. And the another important aspect of microbiology, that is environmental microbiology. Okay, microorganisms are extremely useful for lot of various process in the environment and for the cleaning up of the environment as well. तो ऐसे कुछ examples हमें इस lesson में देखना है. Okay, so it is not a very big lesson. थोड़ा हमने last time discuss कर दिए थे. Quickly we'll take a look at that and then we'll continue from there. And Saturday, day after tomorrow, again I'm taking the class. तो उसमें ये lesson complete हो जाएगा. Introduction to microbiology. ठीक है? Okay. So the first thing, dairy industry हमने देखा था last time. Correct? So dairy industry is a very large industry, at least in our country. Because जो milk and milk products है, this has got a most demand everywhere. Correct? So बहुत सारे type के dairy products बनते हैं. This is a glimpse of the dairy industry that we have. Okay, poultry, I mean dairy के animals होते हैं. There are mechanized instruments available to collect the milk from them. Okay, like अभी ऐसा sector हो गया, and as you can see from these pictures, कि as far as possible, when it is any kind of a food product which is manufactured at the industrial level, so the food products are not manually handled by any person. Okay, so there are proper costumes, as you can see.
ये ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, तो द पर्सन शुड नॉट पर्सनली कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी फूड प्रोडक्ट. इवन मिल्क भी जब कलेक्ट करते हैं, यू सी दिस एंड यू कंपेयर दैट विद जो तबेला बोलते हैं हम लोग, वहां से कैसे मिल्कमैन कलेक्ट करते हैं. Okay, at the industrial level, these are the mechanized ones. So that at any cost, the same microorganisms should not contaminate the food products also. Microorganisms के मामले में इतना बैलेंस रखना पड़ता है कि those microorganisms which are very useful for us, we have to make use of only them and not allow the contaminants to damage the food products. Because pathogenic microorganism can also spoil everything. And when at the industrial level, they are produced in very large quantities. So जरा सा spoilage मतलब it's a huge loss. That is why these kind of devices are available. Okay, so even from a job perspective, if you see, अभी जो तुम लोग सीख रहे हैं तो knowledge point of view it is important. But as a career prospect also, you should be able to take a look. If you are interested in this kind of work, so there are people required to work in these industries. They should have the knowledge of quality control, okay, और instrumentation का knowledge होना चाहिए. Okay, they should have the knowledge about animal husbandry. A person should have an expertise about microbiology also, right? So all this food science and nutritionist का role आता है यहाँ पर, right? So all these people are required in such industries. It is a proper job. तो ऐसे बहुत industries हैं अपने country में. We have discussed about Amul as one of them. Okay? So अभी dairy industry में सबसे पहले क्या आया था? तो यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया from like I have prepared this only based on your textbook. Okay? कि किस तरह का process use करते हैं. So the bacteria which are present in the milk itself are used for the forming of various products, and you know very well lactobacillus is one of them. Okay, so what do you mean by pasteurization? The raw milk which is collected from the animals, uska pasteurize karte hain. So what do you mean by pasteurization? They boil it and then they cool it. So what is the use of that? See, boiling and cooling तो हम घर पे भी करते हैं. Microbes destroy हो जाते हैं. Okay, so it is normal boiling and normal cooling. There's a slight difference between just boiling and cooling and pasteurization. There is something called as HTST method. HTST stands for high temperature short time. Okay, normally the milk that we boil in our homes, okay, we take the milk in a vessel, we keep it for boiling maybe over a slow flame and we allow it to boil nicely. And कभी कभी हम टीवी देखने में बिजी रह जाते तो गिरा भी देते. Correct? So that happens. But later on, the boiled milk after the gas is put off, do we keep the boiled hot vessel of milk directly in the fridge? नहीं. अगर वो गर्म दूध का बर्तन डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? What will happen? कभी किया है ऐसा? दूध खराब होगा कि फ्रिज खराब होगा? Fridge. Yes. And दूध भी खराब होगा. कि the milk should not be, in fact any food matter, कि वो एकदम गर्म नहीं होना चाहिए जो फ्रिज में रख देते डायरेक्टली. Okay, so we allow it to cool to a normal room temperature, then you can preserve it in the refrigerator. ठीक है, but pasteurization में ऐसा नहीं होता. It is high temperature short time. You boil the milk to a high temperature and suddenly cool it down. So that destroys all the harmful microbes. Because microorganisms are very temperature sensitive. Okay, एक optimum range में वो survive कर सकते हैं. So if you suddenly shift the range, they get inactivated. वो मर जाते हैं. So harmful microbes are killed because of that. That is pasteurization. तो वो industrial level पे होता है because it is done on a large scale. घर पे हम नहीं कर सकते. That is HTST method. And the rest of the process, you know, कि जो useful bacteria है, जैसे lactobacilli, they do fermentation or the anaerobic respiration. Lactic acid is produced and coagulation of the milk proteins.
घर में दूध के पतीले में जो मलाई बन जाते हैं बॉईल करने के बाद, दैट इज नथिंग बट द मिल्क प्रोटीन्स विच आर कोआगुलेटेड। ओके, दूध का वो मलाई खाते हैं ऊपर का, सम पीपल दे लाइक टू हैव इट, मस्त एकदम कड़क रहते हैं। एंड यू बॉईल मिल्क वेरी नाइसली, तो बहुत अच्छा मलाई बन जाते हैं, लस्सी वगैरह में डालते हैं देखो। Okay, so that is nothing but the milk proteins which are coagulated, and then it also gets the characteristic taste and flavor, okay, because of the production of certain compounds like lactic acid. ठीक है। then अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने देखा लास्ट टाइम, सम ऑफ देम लाइक योगर्ट। ओके, योगर्ट क्या है? दही। कर्ड एंड योगर्ट में थोड़ा सा फर्क है, योगर्ट इज मोर थिक एज कंपेयर टू कर्ड। ओके, तो योगर्ट के लिए क्या किया जाता है? अगेन आई प्रिपेयर लाइक अ फ्लो चार्ट कि कैसे प्रिपेयर होता है इंडस्ट्री में। तो देर इज कंडेंस्ड मिल्क पाउडर विच इज अवेलेबल, या डेयरी वाइटनर करके भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज मिक्स्ड विद द मिल्क, फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट एंड इट इज फॉलोड बाय boiling of the milk to a normal room temperature. Okay, and then very important, you should remember when it comes to yogurt, you have to remember the names of these two bacterial strains, because यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो विच बैक्टीरिया आर यूज्ड, दैट शुड बी नोन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो यू हैव स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, 1:1 proportion. This is a very important part of yogurt preparation. Okay, then you have lactic acid बन जाता है, proteins का gelling हो जाता है, तो it gets a consistency. Okay, density of consistency as you can see in this picture. Okay, जैसे चम्मच में उठाया तो एकदम ऐसा क्रीमी जैसा निकला हुआ है। That is possible because of this proteins that gel out, lactic acid के वजह से। तो if the fermentation is correct, then the consistency you get is correct. Okay, and then there is a compound called acetaldehyde which is produced, that gives the yogurt its characteristic taste. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं कि योगर्ट गेट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, यू मस्ट से एसिटाल्डिहाइड। ओके, एंड देन वेरियस फ्रूट जूसेस आर आल्सो एडेड, मार्केट में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, सो लाइक यू हैव स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ओके, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द योगर्ट्स आर अवेलेबल। तो स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, इट टेस्ट वेरी नाइस। ओके, स्नेहा के मुंह में पानी आ रहा है, राइट? ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट योगर्ट? सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रश अप क्विकली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर। ओके, यस, तभी बटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं। हाँ, दीक्षा के चेहरे पे स्माइल आ गया है ना, आज डिनर में पूछने वाली है बटर डालो भर भर के। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर। ओके, अभी इंडिया में अगर देखा जाए कल्चरली, सो फेमस जो बटर है, आजकल तो अमूल बटर बहुत चलता है मार्केट में, बट सबसे फेमस बटर है वो अपना कृष्ण भगवान वाला मक्खन, करेक्ट? सो दही के टाइम पे खाते हैं दिस वन, दिस इज द क्रीमी बटर। तो पुराने जमाने में तो अमूल एंड ऑल वाज नॉट देयर एट ऑल, सो दिस वाज द बटर दे यूज्ड टू प्रिपेयर एट होम, है ना, कड़क मस्त दूध निकलता था, स्पेशली बफेलो मिल्क, बिकॉज दैट यूज्ड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फैट इन इट, एंड देन उसको अच्छे से ऐसे छान कर मटके में स्टोर करके रखते थे, तो एकदम बढ़िया बटर मिलता है। नाउअडेज आल्सो इवन इफ यू गो टू सम डेयरी शॉप्स हु हैव देयर ओन सेटअप, तो दे प्रिपेयर दिस एंड इट इज अवेलेबल, एंड ये बहुत टेस्टी होता है, एंड इट इज एक्चुअली अ लो कोलेस्ट्रॉल बटर, सो वेरी गुड फॉर द हेल्थ आल्सो एज कंपेयर टू सॉल्टेड बटर लाइक अमूल एंड ऑल। ओके, अमूल का टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, but it is salted butter, so it should not be consumed in too much quantity at a time. And that again depends upon the area and all. If you go to cold places, so you can have enough of it. I remember many years back, like we had been to Kashmir, एकदम ठंडा मौसम, तो वहां पे आलू के पराठे देते थे, एंड एक एक आलू के पराठे के ऊपर आधा आधा अमूल का स्लैब, that golden brown butter used to just melt on that paratha, but मजा आता था, but that we cannot have over here in Bombay.
Okay, and you know very well कि I was in Dehradun for 4 years for my PhD, so that is again an area which is साल के 6 महीने तो ठंड पड़ा रहता है, and that too I used to stay with a Punjabi family, so you can understand. Okay, so I got my own secondary growth in those years. So that was all because of this butter. Okay, तो ये अपने ये टेंडेंसी होता है बटर का कि it accumulates in your body because it has got good amount of cholesterol content. So there are slabs available बटर के, इसको कट किया जाता है. Okay, और it is available loosely like this. ठीक है, so sweet cream and cultured butter. जो अमूल वाला जो है that is an example of a cultured butter. Sweet cream is this one, कृष्ण भगवान वाला मक्खन. In both the cases you require microorganisms. Okay, ये local level पे बन जाते हैं, but this one is prepared at the industrial level because there are too many quantities of it that are prepared at a time. अमूल का मैंने example दिया था last time. Okay, but ultimately to some extent they are good for the health because fats are one of those nutrients that provide good amount of energy also. It all depends upon where do you stay, what kind of a climate is there, and how much you consume as per your physical activity. Okay, Pranav, your question is ghee is also a type of butter. You can say that it is extracted from the milk, तो वो नॉन हाइड्रोजनेटेड फैट बोल सकते हैं. ओके, so it is also prepared at home and घर का बना हुआ देसी घी जो होता है that is one of the best. Okay, market brands can be more of preservatives that should be avoided. ठीक है, so ये हुआ बटर का. And then you have cheese. Okay, all different types of cheese. ये देखो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनता है. This is how it is available. Okay, ऐसा लगता है एक एक ऐसा बड़े बड़े बटन जैसे रखे हुए हैं and these are prepared. Okay, and cheese is consistency के वजह से कहा जाए तो cheese is not very soft, it is more of a thick one as compared to butter, but then cheese also comes in again various different forms. Okay, तो इसका भी अपना procedure है, and for cheese you have to remember the names of these microorganisms. Okay, like you have lactobacillus lactis, then you have lactobacillus, क्या लिखा है यहाँ पे, ये बीच में कुछ आ रहा है, crematis, right? Cremoris, then Streptococcus thermophilus. Okay, these names of microorganisms you have to remember throughout this lesson. इस lesson के end तक अलग अलग cases में microbes के नाम दिए हुए, you have to learn them. So what I will suggest is for each one अपने जो भी तुम लोग notes बनाते हो तो उसमें just listing करो. Okay, this procedure you have to know anyways, but just for the names of microorganisms. जैसे yogurt लिख दिए तो दोनों microbe का नाम लिख दो, चीज लिखने के बाद इन तीनों का नाम लिखो, ऐसे और भी आगे आएंगे. Okay, so just keep writing the names. So in one stretch you can learn the names at least. Okay, and सबके सब एक ही दिन में learn करने को try मत करो because otherwise you will create hybrid microorganisms. Getting it? Okay, and then cheese में important part आ जाता है this sourness. एक typical सा flavor होता है cheese का. Okay, that is the sourness which is created, and then there is something called whey. Yogurt का पानी निकालते हैं, कड़क बना जाता है. Okay, and then important thing is density imparted, and the yogurt which you get from which the water liquid part is removed, उसका ये सारे process होते हैं. Cutting, washing, rubbing, salting, mixing of microbes, required pigments and flavors, तब जाके बनता है cheese. So it is not possible to prepare cheese at home as compared to other dairy products. Okay, ये industrial level पे ही होते हैं. ठीक है, and then the cheese which is produced is cut into pieces, it is stored, or in whatever form it has to be sold in the market, that is created. ठीक है, everybody is understanding all this? Aditya, Mrunal, Prachi, Gargi, I hope सब लोग हैं यहाँ पर. Yes. Okay, ठीक है. And then when it comes to cheese, we know very well, हमने last time देखा था कि basic process remains the same like this, but there are various different forms of cheese available in the market. And ये भी एक point हमने देखा था कि earlier days में cheese used to be prepared from an enzyme called rennet, which was obtained from the alimentary canal of cattle.
पहले ऐसा बनता था चीज. ओके, सो कैटल के एलिमेंट्री कैनाल से अगर ये निकाल कर बनाते थे, सो पीपल डिड नॉट यूज टू प्रीफर, स्पेशली द वेजिटेरियंस, because it was obtained from an animal source and that too उसके elementary canal से. So this kind of rennet tablets are available market में. ये tablets को use करके इसमें से चीज बनाते हैं. So because vegetarians did not used to prefer that, so market value कम हो जाता था. That is why later on another process was used by extracting enzyme protease, for which fungi are used. Because fungi के पास वो enzyme होता है protease, by which it can be used to produce the cheese. This rennet tablets which are available in the market, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन. ओके, उसमें से नाम पड़ा है रेनेट. तो रेनिन इज द नेम ऑफ द एंजाइम which is used to prepare the cheese in a commercial manner. Okay, and then see the different forms of cheese. जैसे ये देखो, this is called cottage cheese. cottage cheese का लोकल नाम क्या है? पनीर. पनीर, है ना. पनीर हम लोग घर पे भी बना देते हैं, या बनाते नहीं तो कभी कभी बन जाते हैं. करेक्ट. दूध अगर उबालते हुए फट गया किसी रीजन से, तो वी डोंट वेस्ट दैट, वी प्रिपेयर पनीर. उसका मलाई निकाल कर ब्राइन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके मस्त पनीर बन जाता है, और अगले दिन नाश्ते में पनीर भुर्जी. करेक्ट. वी कैन मेक यूज ऑफ दैट. सो दैट इज कॉटेज चीज. ओके, देन क्रीम चीज. ओके, मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं चीज स्प्रेड. ओके, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसे ब्रांडेड पैकेट्स में आते हैं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली टेक लाइक बटर एंड यू कैन अप्लाई. तो उसको बोलते हैं क्रीम चीज. सो द थिंग ओवर हियर इज अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी. क्रीम चीज का कंसिस्टेंसी ऐसा है कि यू कैन एक्चुअली टेक सम पार्ट ऑफ इट एंड स्प्रेड इट, अनलाइक अदर चीज. ओके, एंड देन यू हैव मोज़रेला चीज, एकदम आइसक्रीम जैसा लगते हैं. ओके, तो मोज़रेला चीज कहाँ पे यूज करते हैं? पिज्जा. पिज्जा के टॉपिंग्स में, बिकॉज इट कैन मेल्ट. करेक्ट. यस, इसलिए एकदम दीक्षा ने वीडियो बंद कर दिया, आज नहीं देखा जा रहा है ना. यस दीक्षा. आदित्य, आज डिनर पे बहुत डिमांड होने वाला है लग रहा है घर पे, राइट. बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स दिखा दिए, आगे देखते हैं तो मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ. ओके, सो मोज़रेला चीज इज यूज्ड फॉर अदर फूड प्रोडक्ट्स, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी एंड द टेस्ट, है ना. अभी पनीर भी है, तो पहले बेसिक प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है, बट यू गेट इट इन द फॉर्म ऑफ दोस पनीर क्यूब्स. मार्केट में ऐसा मिलता है प्रोडक्ट्स, है ना. एंड दोस क्यूब्स आल्सो वी यूज. तो पनीर क्यूब्स तो कितना अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं. पनीर के अलग अलग सब्जी बनाते हैं, और पनीर का बारबेक्यू बनता है, यू नो दैट. यस आनंदिता, भूख लग रही है. राइट. यस, देन और क्या बनाते रहे पनीर के डिशेस? वेयर एल्स डू यू यूज पनीर? मुझे पनीर चिल्ली, ये देख आ गया पनीर चिली, वेरी गुड. शाही टुकड़ा. ओके, शाही टुकड़ा, ठीक है. शाही टुकड़ा स्वीट रहता है, पनीर का नहीं बनता. आदित्य, Sorry, जिसको sorry, तूने sorry. पनीर सोच के रहता है. खाया वो कुछ और निकला है, ठीक है. और सर पनीर मसाला भी बनता है ना सर? बहुत है, किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में देख लो, सब्जी के डिशेस में यू विल गेट लॉट ऑफ वेजिटेबल प्रिपरेशंस फ्रॉम पनीर. करेक्ट. एंड चाइनीज डिशेस में भी पनीर डाले जाते हैं, राइट. आजकल तो डोसा के भी वैरायटीज में पनीर आ वो गए. लोग टोफू बोलते हैं ना. टोफू इज स्लाइटली डिफरेंट, आई हर्ड. इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज पनीर. हाँ, वो सोया से बनता सोया है, से बनता मिल्क है, नहीं सोया रहता. मिल्क से बनता है वो. यस. हाँ, ओके, दैट इज टोफू. ओके, वो पनीर अलग. वेगन लोग खाते हैं. हाँ. उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है ना. मैंने टेस्ट नहीं किया है कभी, बट हाँ, ट्राई कर लेना चाहिए, राइट. ओके, तो पनीर इज एक्सट्रीमली यूजफुल, एंड पनीर को कभी कभी बहुत अच्छे से हम गोल्डन फ्राई करते हैं. करेक्ट. एंड देन यू पुट इट एज अ टॉपिंग ऑन द पिज्जा, राइट. ओके, रिलैक्स. देन आफ्टर मोज़रेला चीज,
Then you have something called cheddar cheese. This is a semi hard type of a cheese. मतलब ये ऐसे इसका थिकनेस और कंसिस्टेंसी होता है कि दिस कैन बी ग्रेटेड, एज यू कैन सी हियर. पिज्जा में कभी कभी डाला जाता है, यहाँ इंडिया में ज्यादा नहीं करते, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ अ चीज, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, so it takes more time for digestion also. So people who live in very cold places can afford to have this, and those who are culturally habituated to consuming this kind of product. इंडिया में खाएंगे तो पता है कि इंडिया में नॉर्मल घी के साथ भी खाते हैं तो इंसान कैसे बैठ जाता है खाने के बाद. करेक्ट. सो चेडर चीज मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, वो तो फ्लैट हो जाएगा, राइट. So but there are people, and western countries में they have the habit of consuming alcoholic beverage also along with these products. लिकर वगैरह भी लेते हैं, बियर के साथ पीते हैं, तो along with that it can be feasible. इंडिया में we are not having that kind of a custom yet. Okay, अभी शुरू तो हुआ है, that's a different thing, but we cannot have that. Okay, so that is cheddar cheese, semi hard variety. This can be made if it is stored for 3 to 12 months. तो वाटर कंटेंट और थोड़ा सा रिड्यूस करके एकदम कड़क सा बन जाते हैं. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज अनदर वेरी हार्ड वैरायटी ऑफ अ चीज जिसको बोलते हैं पार्मेसन चीज. दिस यू विल गेट व्हेन यू स्टोर इट फॉर अबाउट 12 to 18 months. ये तो एकदम मस्त कड़क चीज का वैरायटी है. सो अगेन दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन यू ग्रेट इट इन अ फाइन वे. ओके, एंड ये सब ज्यादा बेटर रहता है व्हेन यू माइक्रोवेव इट, बिकॉज तब जाके वो मेल्ट होगा. नॉर्मल कंडीशन में पैन वगैरह में बनाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंज्यूम इट. ओके, बट दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज दैट इज अवेलेबल. सो इंडिया में मोस्टली कॉटेज चीज, क्रीम चीज एंड मोज़रेला चीज ये ज्यादा यूज करते हैं. ओके, दिस इज नॉट मच इन इंडिया बट वेस्टर्न कंट्रीज में यूज करते हैं. ठीक है. देन यस, वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोबायोटिक्स आल्सो. ओके, प्रोबायोटिक्स क्या है? बेसिकली ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. सी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अपने इंटेस्टाइन में देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड बैक्टीरिया. ओके, बैड बैक्टीरिया कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, intestinal problems, digestive problems. Okay, and good bacteria are the ones that are associated with our intestine in such a way that they make our digestion better and they also improve our immunity. So we cannot completely rule out the bad bacteria from our system. पूरी तरह से हम उनको नहीं निकाल सकते. Some of it will always be there, but at any given time we should try our level best to ensure a balance in such a way that the number of good bacteria is always more than the number of bad bacteria, and that is aided with the help of probiotics. Okay, so they are nothing but milk products which contain active bacteria. So again you have names of some bacteria here. मैंने एक्स्ट्रा नाम कुछ भी नहीं दिया, जो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में वही मैंने मेंशन किया. So learn only that because यही learn कर लो बहुत है. You can see the names. Okay, so you have lactobacillus acidophilus. Okay, lactobacillus casei. ये casei जो word है ना, ये उससे आया है कि milk contains a type of a protein, one type of a protein, उसका नाम है casein. casein. That's one of the milk proteins. तो उसमें से नाम बना है casei. The bacteria is given that name. Okay, then you have bifidobacterium bifidum. तो ये तीन नाम देने के बाद एक्सेट्रा लिखा होगा. You have to learn these things. तो मैं जैसे लिस्टिंग करने को बोला है तुम लोग को, तो you can give the heading probiotics and write the names of these three bacteria. तो ये products मिलते हैं मार्केट में like cultures. You can directly consume them. Okay, and these products will contain more amount of this bacteria. These are examples of good bacteria that we have in our system. So it maintains the balance of intestinal flora. That is the significance. Okay, and there are different types of products available जो अलग अलग तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं, इंक्लूडिंग डार्क चॉकलेट, योगर्ट, okay, some kind of a soup, pickles, oils, corn syrup, sweeteners, even some microalgae. You know what are algae? Algae क्या होता है पता है? What are they?
एल्गे क्या होते हैं? Mrunal will answer this. What is an alga? एकदम शॉर्ट में बताना कि एल्गे क्या होते हैं. You were there in 9th standard, no? Classification of plants किसी ने तो सिखाया था. What is an alga? बोलो. Can you classify algae under plants? Mrunal, speak up something. Yes, Mrunal, बोल जल्दी. Can you call algae as one type of a plant? Say yes or no. Okay, others. What are algae? May I? Yeah, please. Algae are organisms of the group Thallophyta, and they are green, mostly green in color, and they grow on water. Correct. So they are plants. Pranav, your answer is also correct. They are the primitive group of plants. Thallophyta, that is correct. Mostly they are all aquatic. Some of them, most of them are green in color, and they are available in other colors also. So algae has got a lot of range of thallus. Most of them are unicellular, but there are ones which are macro and multicellular ones also. Okay, so microalgae का मतलब है the ones which are unicellular and they have got a lot of nutritional potential. Okay, एक नया word है आजकल nutraceutical. Okay, nutraceutical का मतलब है कि see normally when you talk about food or vegetarian food, so we associate that with only agricultural products. कि एक लैंड एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड दोस क्रॉप्स आर द वंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर न्यूट्रिशन. बट अभी ऐसा रिसर्च होने लगा है कि पॉपुलेशन इज राइजिंग ड्रास्टिकली एंड फूड बीइंग वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज इट हैज टू बी गिवन टू अ लार्ज पॉपुलेशन एंड उसके साथ साथ एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज रिड्यूसिंग. सो देयर हैज टू बी सम अदर सोर्सेस which should be looked upon जिसमें से न्यूट्रिशन मिल सकता है and the population will get at least its basic requirement of food. तो one such source are the algae. तो पानी में बहने वाले बहुत सारे ऐसे algae हैं which can be easily harvested. They are found in large numbers and they can be stored dried form में या tablet form में powder form में they can be easily given to the people. They are microalgae. Spirulina is one example. Okay, उसको बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. कि ऐसे माइक्रो एल्गे जो होते हैं यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर देयर व्हिच कैन गिव गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज SCP. द मोस्ट कॉमन वन इज स्पाइरुलिना. तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर पॉपुलेशन का बहुत अच्छे से पूरा हो गया तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन टू अकर. तो माइक्रो एल्गे इज वन ऑफ देम. ओके, एंड दे आल्सो एक्ट एज वेरी गुड प्रोबायोटिक्स. तो इनका फंक्शन क्या है? इट इंप्रूव्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. Okay, it also improves your immunity. Okay, and decrease the production of any harmful compound. क्योंकि इंटेस्टाइन जो ऐसा रीजन है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा चलते हैं. So there is a high chance of microorganisms being infecting over there, especially the bad microorganisms, pathogenic ones. तो उनको वहां पे बढ़ने नहीं देना. That is the role of a probiotic. Okay, so this if you consume probiotics, it will activate useful microbes in our system. Okay, and many times it happens कि डॉक्टर्स अभी किसी मेडिसिन बीमारी के इलाज के लिए they will suggest you antibiotics.
we'll learn about antibiotics also again. So डॉक्टर्स कभी अगर मेडिसिन देते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए कि एंटीबायोटिक लेना है करके, so those antibiotics sometimes they destroy the useful or the good microorganisms in your intestine. तो कभी अगर ऐसे एंटीबायोटिक्स ले रहे किसी ट्रीटमेंट के लिए एंड गुड बैक्टीरिया अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो दैट टाइम यू शुड बी कंज्यूमिंग मोर ऑफ प्रोबायोटिक्स that will activate the useful microbes and improve your immunity. Did you understand probiotics, everyone? Okay. Okay. So time का lapse हो रहा है, कट हो जाएगा. Disconnect and call back again. We'll continue from here. ठीक है?